everyone, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to FinTech classes. So in today's class, I will discuss about an important thing, that is types of business. तो आमे already हमारा previous data class रे cover करी सारी छे business रो starting quote हुई थिला, thereafter आमे cover करी थिले objectives of business. So in this class, I will discuss about the types or classification of business. जो बिजनेस रही बिजनेस रो केतेटा वैरायटी रही टाइप्स ऑफ बिजनेस रे कोन सब आसुची. ओके तो स्टार्ट करिवा. सो टाइप्स ऑफ बिजनेस जो रही बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. बिजनेस रो जो क्लासिफिकेशन रही ताको दुईटा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि. ओके गोटी होची इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कॉमर्स. मींस बिजनेस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो आज क्लास रे हमें डिस्कस करिबा मेनली इंडस्ट्री ऊपर. ओके बिजनेस रो टाइप्स केतेटा दीटा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. बाकी इंडस्ट्री रो किछि सब कैटेगरी अछि जदी अछि कोन सब अछि, कॉमर्स रो किछि कैटेगरी अछि जदी अछि कोन सब अछि ताको हमें डिस्कस करिबा. तो बेसिकली आज डिस्कस करिबा इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप. ओके तो इंडस्ट्री एंड तार टाइप्स डिस्कस करिबा आगु प्रथमे टिके हमें बुझिबा इंडस्ट्री आछि कोठु ना बिजनेस रो. तो बिजनेस रो जो पार्ट रहिला सेटा गोटे पार्ट आछि तार इंडस्ट्री, अनदर पार्ट इज कॉमर्स. तो हमको जानिबा को पड़िबो इंडस्ट्री रो मीनिंग कोन. सो इंडस्ट्री मीन्स industry refers to all those activities which are concerned with production of goods and services. Industry refers to all those activities which are concerned with production of goods and services. माने जोठी की गुड्स किंबा सर्विसेज प्रोडक्शन करा जाय ताको हमें कहिबा इंडस्ट्री. किंबा हमें एमिति भी कहि परिबा इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू व्हिच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. इंडस्ट्री माने से सब एक्टिविटी जा थ्रू रु की रॉ मटेरियल गुडा को कोथरे कन्वर्ट हुए ना फिनिश्ड गुड्स रे कन्वर्ट हुए. तो इंडस्ट्री मींस नथिंग. इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. ओके और वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. बाकी इंडस्ट्री रो टाइप्स केते प्रकार अछि. इंडस्ट्री जो रहउची तार एक्टिविटी वाइज तार किछि कैटेगरी रहिछि, तार साइज वाइज मध्ये तार किछि कैटेगरी रहिछि. जदि हमें एक्टिविटी बेस रे इंडस्ट्री को सब कैटेगरी करबा तो इंडस्ट्री थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्शियरी इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू इट्स एक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. ओके जदि हमें साइज हिसाब रे इंडस्ट्री को सब कैटेगरी करबा देयर आफ्टर लार्ज इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री विल बी देयर. तो हमें प्रथमे डिस्कस करबा एक्टिविटी वाइज इंडस्ट्री केते प्रकार. तो एक्टिविटी बेस रे इंडस्ट्री थ्री टाइप्स, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, what is secondary industry, what is tertiary industry. Is there any subcategory of primary industry and secondary industry and tertiary industry? If yes, is there some categories of primary, secondary and tertiary industry? What are they? So I will discuss one after another. So first start kariba hame primary industry do. So primary industry means what? Primary industry means it relates to all those activities which are concerned with extraction, production, processing of natural resources, reproducing of living spaces. Okay कौन कहिला प्राइमरी इंडस्ट्री माने कौन? It relates to all those activities which are concerned with extraction, production, processing of natural resources and reproducing of living spaces. अच्छा तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन करे? प्राइमरी इंडस्ट्री को ना ए हिसाब रे दीटा पार्ट रे डिवाइड करा गला. कौन ना गोटे होची एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री रो काम होला प्राइमरी इंडस्ट्री या तो डील करिवो. प्राइमरी इंडस्ट्री इज डीलिंग विथ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके नेचर रो से रिसोर्सेस आनिबो, नेचर रो से रॉ मटेरियल कलेक्ट करिवो. ओके तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो रहउची तार एरिया दीटा वे रे डिवाइड हमें करि परिबा, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री माने होची से प्राइमरी इंडस्ट्री जोटा की कोन करे ना अर्थ रो एक्सट्रैक्शन करे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. कोन कहिला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? देखो दिस इंडस्ट्री टेक्स रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग ऑयल, अदर मिनरल फ्रॉम अर्थ. माने भूमि रो से कोन करे डिफरेंट प्रकार रो जो खनिज पदार्थ अछि ताको बाहर करे. ठीक अछि ताको एक्सट्रैक्ट करे, ताको हमें कहबा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस
for extracting mineral including drilling, pumping, quarrying and mining etc. ए सब जिनस गुडा को आसुची हमर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री माने भूमि रु जो खनिज पदार्थ को हमें जो बाहर करिबा खोली ताको हमें कहिबा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रो काम होची अर्थ रु कोन करिबो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल रहिछि ताको बाहर करिबा। ठीक अछि। देयर आफ्टर अस जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मींस व्हाट? जेनेटिक इंडस्ट्री इज एंगेज्ड in reproduction and multiplication of species of plant and animal with the sole object of cell। ये कौन करिवो? जेनेटिक इंडस्ट्री कौन करे? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट क्रिएट करिबा, डिफरेंट ब्रीड रो एनिमल क्रिएट करी कि ताको कौन करे? सेल करिबार इंटेंशन रे ये कौन करे? डिफरेंट ब्रीड्स क्रिएट करे। ठीक अछि, ताको हम कहबा जेनेटिक इंडस्ट्री। गोटे एग्जांपल देबा। एग्जांपल रे आसीबा हमरा एनिमल ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरीज एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। किबा गोटे छोटो एग्जांपल देबी रिलेट करि परिबो। सपोज तम पाखरे दीटा डॉग अछंती, यू हैव वन मेल डॉग एंड फीमेल डॉग। ठीक अछि। जदी सेमानकर कॉम्बिनेशन रे किछि पपीज होचंती, ठीक अछि, then you are selling them, then this is also a part of genetic industry, means नुआ breed create करी कि ताको मार्केट रे सेल करिबा। तो genetic industry ताको हमें कहि परिबा, means they are dealing with living things। Okay, so genetic industry means what? Genetic industry is engaged in reproduction and multiplication of species of plant, different type of plant। बेले बेले देखि दिबो प्लांट मान करे गोटिए प्लांट रे दीटा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर माने फ्लावर ही थिबो। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। Okay, so genetic industry means that industry which is engaged in reproduction and multiplication of species of plant and animals with the sole object of cell। Example रे animal breeding अच्छी, cattle breeding, fish hatcheries, nursery, etc. There are different type of genetic industry। Okay, so this is all about primary industry। Primary industry again two types, genetic and extractive industry। Extractive industry रो काम होला कोन ना, this will extract different type of material from the earth, and genetic industry is dealing with living thing माने different type of breed create करिबा होची आरो काम। Okay, thereafter जीवा secondary industry। So what is secondary industry? Secondary industry कोन करे? Secondary industry uses the material provided by the primary industry as a raw material। कौन कहिला देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री रे? सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इन कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट व्हिच कैन बी यूजेबल बाय द कंज्यूमर्स। ओके, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री रो फर्दर किछि कैटेगरीज अछि की? आंसर होछि यस। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is manufacturing industry and construction industry। Now question is, what is manufacturing industry and what is construction industry? Manufacturing industry means that industry which converts the raw material into semi finished or finished goods। माने जो इंडस्ट्री रे रॉ मटेरियल या तो सेमी फिनिश्ड या तो फिनिश्ड गुड्स रे कन्वर्ट करा जाय ताको हमें कहबा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री means the industry which engaged in construction of bridge, building, factory, road etc. is regarded as construction industry। बाकी manufacturing industry जो रहिछि that is again further divided into four parts, that is synthetic industry, processing industry, assembling industry and analytical industry। तो हमको जानिबा को पड़िबो सिंथेटिक इंडस्ट्री माने कोन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री माने कोन, एनालिटिकल इंडस्ट्री माने कोन एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री माने कोन। सो सिंथेटिक इंडस्ट्री माने कोन? ई टाइप रो इंडस्ट्री रे कोन करा जाय? टू और मोर रॉ मटेरियल को कोन करा जाय? टुगेदर करा जाय। हियर इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मींस इन केस ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल्स आर माने कोन करा जाय? दीटा दुई किंबा दुई रु अधिक मटेरियल को कोन करा जाय? एकाठी करी के गोटे नोआ प्रोडक्ट तयारी करा जाय। मींस in this industry generally they are putting together two or more materials to form a new product। example जदि आमे नेबा सीमेंट जदि आमे तयारी करिबा, सीमेंट तयारी करिबा पे बहुत सारा प्रोडक्ट रा कॉम्बिनेशन दरकार होय। वी हैव टू मिक्स प्लास्टिक, कंक्रीट, जिप्सम, कोल एक्सेट्रा। ई सब जिंस रा कॉम्बिनेशन रे सीमेंट तयारी होबो। तो सीमेंट तयारी करिबा पे बहुत सारा रॉ मटेरियल रा कॉम्बिनेशन हमकु दरकार पड़िला। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री माने जेते बेले दुई किंबा दुई रु अधिक मटेरियल को हमें एकाठी करके गोटे नुवा प्रोडक्ट तयारी करिबा ताको हमें कहिबा सिंथेटिक इंडस्ट्री। Thereafter processing industry means what? Processing industry is concerned with processing of raw materials through different stage of production। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रे कोन करा जे गोटे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेस रे नेकी डिफरेंट प्रोडक्ट तयारी करा जे। आ गोटे कथा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जदी प्रोसेस रहला, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3।
प्रोसेस 1 रे जदी रॉ मटेरियल पुट करिबा सेथिरु डेफिनेटली गोटे फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहरिबो तो गोटिए प्रोसेस रो फिनिश्ड गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस पाई हिजबो रॉ मटेरियल मींस प्रोसेस 1 रे जो गुड्स हमें देथिले रॉ मटेरियल किछि पुट करले ओके सेथा प्रोसेसिंग हला प्रोसेसिंग हे कि किछि फिनिश्ड गुड्स बाहला जते बेले सेटा प्रोसेस 2 को जिवो प्रोसेस 2 पाई प्रोसेस 1 रो फिनिश्ड गुड विल बी रॉ मटेरियल सेमिति प्रोसेस 2 रो फिनिश्ड गुड प्रोसेस 3 रो हे जिवो रॉ मटेरियल एमिति प्रोसेस कंटिन्यू रहइबो जते जाय कि कंप्लीटली हमको फिनिश्ड गुड्स मिली ओके thereafter जदि हमें एग्जांपल लेबा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रो चलो नॉर्मली चलो हमें जो चिप्स खाउचे लेस ठीक अछि तो लेस कोन गोटे वन टाइप ऑफ पोटैटो चिप्स तो ये जो पोटैटो चिप्स बनेबा पई बहुत सारा प्रोसेस देकी जीवा को पडुची यस सर नो तो प्रोसेस जदि हमें देखिबा प्रथमे कोन ना जाउची पोटैटो को माने एग्रीकल्चर करी कि पोटैटो बना जाए तापर ताको क्लीन करा जाए ताको तापर पिल अप करा जाए ताको देयर आफ्टर ताको डिफरेंट शेप रे ताको कटा जाए देयर आफ्टर ताको फ्राई करा जाए देन फ्लेवर ऐड करके हमको पैकेट रे पैक करके सेटा मार्केट रे छड़ जाए तो एठी बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व हे गला सेमिति हम जो टोमेटो केचप खाउचे टोमेटो केचप दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रथमे टोमेटो को हम एग्रीकल्चर करके टोमेटो प्रोडक्शन करबा से थ्रू डिफरेंट प्रोसेस हमें इन्वॉल्व करके प्रोसेस को फॉलो करके टोमेटो केचप हमें बनाउचे ठीक अछि सो बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन वॉच द वीडियो बैकग्राउंड रे जोटा की चालुची कोन ना एठी देखा जाउची कोन ना केमिति हमें जो टोमेटो केचप जो तयारी होची तार प्रोसेस केमिति सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मींस गोटे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल गोटे प्रोसेस रे दिया जीवो से प्रोसेस कंप्लीट हला पर से पुनी सेकंड प्रोसेस पुनी थर्ड प्रोसेस एमिति से कंटिन्यू हे जीवो गोटे प्रोसेस कंप्लीट हला माने फर्स्ट प्रोसेस 1 रो फिनिश्ड गुड विल बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द सेकंड प्रोसेस रो फिनिश्ड प्रोडक्ट विल बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ थर्ड प्रोसेस एमिति ये प्रोसेस टा कंटिन्यू हे जीवो जते जे हमें फाइनली हमरो फिनिश्ड प्रोडक्ट पाई ओके thereafter analytical industry means what raw material in this case raw materials are broken down in several useful material एठी कोन करा जे गोटिए raw material को आना छै आ सेथुर ना बहुत सारा material को बाहर करा जाय एग्जांपल जदि हमें नेबा ऑयल रिफाइनरी जदि ऑयल रिफाइनरी जदि हमें एग्जांपल नेबा तो हमें देखि परिबा ऑयल रिफाइनरी रे कोन करा जे सेपरेट करा जाय क्रूड ऑयल इनटू केरोसिन गैसोलीन डीजल पेट्रोल ए सब जिंस सेथुर कोन करा जाय बाहर करा जाय मींस एनालिटिकल इंडस्ट्री रे कोन करा जाय ना गोटिए प्रोडक्ट रो बहुत सारा प्रोडक्ट तयारी करा जाय इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री बिकॉज़ सिंथेटिक इंडस्ट्री रे कोन करा जाउथला ना बहुत सारा प्रोडक्ट एकाठी आनी कि गोटे नुवा प्रोडक्ट तयारी करा जाउथला बट एनालिटिकल इंडस्ट्री रे कोन गोटिए प्रोडक्ट रो बहुत सारा प्रोडक्ट तयारी करा जाउछि ओके thereafter हमें पढ़ले प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री means what assembling industry is engaged in bringing together various components or part माने असेंबलिंग इंडस्ट्री रे कोन करा जाय जनरली बहुत सारा प्रोडक्ट को एकाठी आना जाय कि ताको असेंबल करके गोटे नुवा प्रोडक्ट तयारी करा जाय लाइक कार इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल्स थाउची किंबा बाइक मैन्युफैक्चरिंग थाउची तो सेठी कोन करा जाय जो जते बेले हमें कार मैन्युफैक्चर करबे तो कार तो बहुत सारा पार्ट यूज होय लाइक तार इंजन अछि तार मॉडल अछि तार टायर अछि तो ए सब जिंस गुडा को अलग अलग वे रे प्रोडक्शन करिकि ताको एकाठी गोटे जगह रे आनी कि सब गुडा को जिंस को असेंबल करके हमको लास्ट को हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलिबो दैट इज अ कार सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री माने जोठी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल को कोन करा जाय असेंबल करा जाय कि गोटे नुवा प्रोडक्ट तयारी करा जाय ताको हमें कहबा असेंबलिंग इंडस्ट्री लाइक कार हो साइकिल हो जदि हमें छोटा एग्जांपल लेबा जदि हमें साइकिल मार्ट जिबा हमें जदि साइकिल बुक करबा सेठी साइकिल रेडीमेड हे कि त थाय बाकी जदि हमें हठात साइकिल जदि बुक करबा तो सी हमको साइकिल सेठी हम आगे ही असेंबल करके दे परिबे बिकॉज़ साइकिल रो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट थाय तो सी हम आगे कोन करंती स्पेयर पार्ट गुडा को कोन करंती असेंबल करंती तार टायर तार नट बोल्ट सब गुडा को कनेक्ट करके गोटे कंप्लीट साइकिल बने के हमको दोचंती तो एठी कोन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री माने डिफरेंट गुड्स को असेंबल करके गोटे नुवा प्रोडक्ट तयारी कराला okay so this is all about types of manufacturing industry so manufacturing industry there are four types of manufacturing industry what are they ना synthetic industry रे कोन करा जाय ना दुई किंबा दुई रु अधिक रॉ मटेरियल को यूज करके गोटे नुवा टाइप ऑफ प्रोडक्ट तयारी करा जाय जेमिति हम एग्जांपल लेले सीमेंट रो देयर आफ्टर हमें पढ़ले प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रे कोन करा जाय गोटे रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेस रे हमें नेकी गोटे डिफरेंट प्रोडक्ट ईच स्टेज रे हमें मैन्युफैक्चर कर परिबा देयर आफ्टर हमें पढ़ले एनालिटिकल इंडस्ट्री रे कोन होय ना गोटे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को नेकी सेथरो डिफरेंट प्रोडक्ट बाहर करा जाय जेमिति हमें पढ़िले ऑयल रिफाइनरी तार एग्जांपल रे हमें देखिले
देन आफ्टर आसिला असेंबलिंग इंडस्ट्री एठी कोन करा जाय बहुत सारा प्रोडक्ट जोटा कि ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट हेतिबे सेमान को कोन करा जाय असेंबल करके गोटे नवा प्रोडक्ट तयारी करा जाय ताको हमें कहबा असेंबलिंग इंडस्ट्री बेस्ट एग्जांपल होची ऑटोमोबाइल्स okay so this is all about the types of manufacturing industry one more thing about manufacturing industry that manufacturing industry generally produce how many types of goods so our answer है manufacturing industry generally produce two types of goods that is consumer product and industrial product बा consumer goods and industrial goods जो manufacturing industry रहिला या तो से industrial goods produce करिवो या तो से consumer goods produce करिवो या तो से दीटा जको produce करि परिवो now question is ए consumer goods पुनी कोन ए industrial goods माने कोन so industrial goods means refers to those goods which are produced to produce consumer goods माने ई प्रकार गुड्स प्रोडक्शन करा जाय जहा को हेल्प करके हमें कंज्यूमर गुड्स तयारी करि परिबा लाइक मशीनरी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा consumer goods means what consumer goods are produced by the manufacturing industry which can be directly consumable by the consumer which can be directly usable by a consumer in their day to day life okay like toothpaste ho soap ho example ठीक अछि so these are consumer goods एथिरे कंज्यूमर को आउ किछि प्रोसेस करबा दरकार नै से डायरेक्टली से जिंस को यूज करि पाइबो ओके सो इंडस्ट्रियल गुड्स माने होछि सेही गुड्स जोटा कि प्रोडक्शन करा जाय टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स ओके बाकी कंज्यूमर गुड्स मींस दोस गुड्स व्हिच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूमेबल बाय द कंज्यूमर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स द लास्ट वन टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री Tertiary industry is the third category of industry. This is otherwise known as service industry और आपको हमें aids to trade मध्य कहि परिबा because ये trade करिबारे हमको help करिवो. Generally tertiary industry ऊपरे हमरो primary industry भी depend करे and secondary industry भी depend करे. बाकी tertiary industry primary and secondary industry भलिया कोनसी प्रकार goods produce करेनी but it deals with insurance banking transportation of goods warehousing advertisement ई सब जिंस सहित डील करे माने प्राइमरी इंडस्ट्री आ सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री भीतर गोटे क्लोज लिंक अछि जणे जनक बिना इनकम्प्लीट बिकॉज़ प्राइमरी इंडस्ट्री कोन कला नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमको रॉ मटेरियल आनि के दे दोछि बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री थ्रू हो किसे जेनेटिक इंडस्ट्री थ्रू हो से हमको कोन करे रॉ मटेरियल दोछि जो रॉ मटेरियल की यूज के करबो ना सेकेंडरी इंडस्ट्री अगेन टू टाइप मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रो पुनी हमें सब कैटेगरी पढ़ले पुनी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड माने टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रो जो टाइप्स ऑफ गुड्स अछि ताको भी हमें स्टडी करले देन आफ्टर ई जो सामान बने देला चलो हमको प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल दे दोची सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स भी प्रोड्यूस करि नेले बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री बाकी ये गुड्स प्रोड्यूस करले तो हबनी आपको पुनी कंज्यूमर पाखो को पहुंचेबा को पड़िबो दैट टू सेफली बाकी ये जो कंज्यूमर पाखो को जो गुड्स पहुंचेबा पई हमको टर्शियरी इंडस्ट्री हेल्प करिवे और सर्विस इंडस्ट्री हेल्प करिवे जोथरे कि इंश्योरेंस बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउसिंग एडवर्टाइजमेंट ए सब जिंस इंक्लूड थाए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री तो हमें गोटे क्विक रिकैप नै जिवा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऊपर फटाफट से चेक हियर सो आज क्लास रे हमें कवर जहां भी करले मुटा को टिके फर्स्ट वे रे कहबी स्टार्टिंग करथिले हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस रो तो बिजनेस रो जो क्लासिफिकेशन थिला दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स चौथी को हमें आज क्लास रे स्टडी करले इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स तो इंडस्ट्री जो थिला इंडस्ट्री अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री secondary industry and tertiary industry primary industry again divided into two part that is genetic industry and extractive industry thereafter hame padhile secondary industry is again divided into two part that is manufacturing industry and construction industry thereafter manufacturing industry रे मध्ये किछि सब कैटेगरी थिला तो manufacturing industry अंडर हमें दीटा जिंस स्टडी करले ना manufacturing industry को टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करे तो तारा आंसर थिला इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गुड्स या तो ये कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करिवो या तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन करिवो देन आफ्टर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रे हमें कवर करिले देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री सिंथेटिक इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री देन आफ्टर हमें कवर करले टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री सो टर्शियरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री ऊपर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड करंती टर्शियरी इंडस्ट्री जनरली कोनसी प्रकार गुड्स प्रोडक्शन करनी जस्ट लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री बट इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री because it acts as an aids to trade because
प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल देदबा सेकेंडरी इंडस्ट्री को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल को यूज करिकी कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करि परिबो बाकी से कंज्यूमर पाखो से सामान पहुंचेबा पई हमको हेल्प दरकार पड़िबो टर्शियरी इंडस्ट्री रो तो टर्शियरी इंडस्ट्री रे बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजमेंट ई सब जिंस इन्वॉल्व हुए सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो if you are new to my channel then do subscribe to the channel and click on the bell icon for getting more updates thank you very much again